Hello, good afternoon. Okay, so in previous lecture we have seen classification of surveying. Now the next is linear measurements. Okay, next topic is linear measurements. What is linear measurements? We show we use chain for the linear measurement. What is linear? What is linear measurement according to you? आप लोग क्या सोचते हो? What is linear measurement? क्या होता है? These are the various method for making the linear measurements. Okay, so the measurements are direct method, optical method, EDM method. These are the methods for the for the linear measurement. Okay, these are the various methods for the linear measurements. But what is linear measurement? Anyone? Anyone knows? In the direct method, the distance is actually measured during fixed field work using a chain or tape. This is the most commonly used method for linear measurement. Okay, so uh, chain generally used for measuring the linear measurement. Generally we use chain and tape for measuring the linear measurement. Linear measurement, what is the necessity for linear measurement? For measure for for measuring the distance. ओके अगर हमें डिस्टेंस मेजर करना हो तो हम लोग यूज़ करते हैं लीनियर मेजरमेंट के लिए विच इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज फॉर द लीनियर मेजरमेंट दे आर चेन टेप पेग these are the these these are the instrument used for the these are the instrument used for the linear measurement. So these are the three methods for the linear measurement. There are direct method, optical method, and EDM. EDM, what is the full form of EDM? I told you. What is the full form of EDM? हेलो, कोई बोलेगा क्या? मैम इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्टेंस मेजरमेंट. The full form is full form of EDM is electronic distance measurement. Okay, so that is a electronic method to measuring the distance. Okay, so what is direct method? In the direct method, the distance is actually measured during field work using a chain or tape. Okay, what is chain? Chain is a distance measurement device. Okay, जिसकी यूज करके हम डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, that is a chain. Okay, so in direct method the distance is measured by the using the chain or tape. This is the most commonly used method for linear measurement. Generally for measuring the short distance we use this method. Okay, जब हमारा एरिया छोटा हो तो in that condition we can go for this method, that is a chain or tape method. The next method is optical method. In the optical method, principle of opticals are used. The distance is not actually measured in the field, but it is computed indirectly. Okay, so this is not a direct method. That's why that is optical method. The instrument used for making observation is called tachometer. Okay, by the use of tachometer, tachometer क्या होता है? That is a उसमें optic का use होता है, and by the use of optics that we show in our experiment hours. Okay, what is the optical method for measuring the distance? The next method is a electronic distance measuring instrument, that is a EDM instrument, have been developed quite recently. Okay, so this is a recent method, this is a new technique, this is a new method for measuring the distance. These are partially replacing the measurements of distance using chain or tape. There is a okay, when we have to measure a large distance, जब distance बहुत ज़्यादा हो, तो in that condition tape and
tape and chain survey is quite tedious. Okay, so in that condition we can go for the EDM method, जहाँ इलेक्ट्रॉनिक रे से बहुत ही कम टाइम में, in a very short duration, we can measure the long distance or large distance. Okay, so that's why EDM method is preferred for the long distance when the distance is very long. So in that condition we can go for the EDM method. These are partially replacing the measurements of distance using chain or tape survey. This is a large variety of such is instrument, and depending upon the precision required, the instrument should be used. Okay, so we there are some precision required for this is a EDM instrument. Okay, this is a staff. So यहाँ पे यहाँ पे एक लाइट होती है जो यहाँ पे आपको बाइसेक होगी, एंड यू कैन मेजर डिस्टेंस बाय इन दिस डिस्प्ले. ये डिस्प्ले आपको शो करेगी द डिस्टेंस, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस स्टाफ एंड दिस इंस्ट्रूमेंट. ओके, उसके अंदर लेज़र सिस्टम यूज़ होती है, तो बाय द यूज़ ऑफ दिस दैट लेज़र सिस्टम यू कैन मेजर द डिस्टेंस बिटवीन. आपको सपोज कि दो स्टेशन के बीच का डिस्टेंस मेजर करना है, रोड के दो एंड पॉइंट का distance. Suppose you want to measure distance between two end points of the road, so what you have to do, you have to place this instrument at the first station, or give first point, and this staff at this second point. Okay, आपको फर्स्ट पॉइंट पे इंस्ट्रूमेंट रखना है, सेकंड पॉइंट पे ये स्टाफ, दिस इज अ स्टाफ. ओके, वो रखना है. और इसके अंदर जो रेज हो गए, यहाँ से रेज हो गए. ओके, तो ड्यू टू दैट you can measure the distance between these two points, on distance will be show in this display. ये display में आपको distance show होगा. So this is a EDM method or electronic distance measurement device. The method given below may be used in recognize or for detecting major mistakes in linear measurements obtaining with a chain or tape. Okay, so chain और tape के अंदर क्या होता है कि there are chances to be error. Okay, उसके अंदर error आने के chances रहते हैं, but this method is EDM method is most accurate method. इसमें errors के chances बहुत कम रहते हैं. Okay, so this is a more favorable method for measuring the distance. So pacing. A distance between 2 points can be approximately be determined by counting of number of paces and multiplying it with average length of the pace. Okay, so that is pacing. This is that is a definition of pacing. The distance between 2 points. Okay, suppose there are 2 points. First point is A. First second point is B. So a distance between 2 points can be approximately be determined. Okay, by counting the numbers of passes and multiplying it with the average length of the pace. So that is a passing. Okay, मतलब ये दिस इज पैसिंग. ओके, मतलब नंबर ऑफ पैसिंग. आप लोग जो वॉक करते हो तो તમારા જે પગલા છે that is a pace. Okay, so by the using by the counting of numbers of pace you can measure the distance. Okay, કેટલા પગલા છે. Okay, this is not so much accurate method, but this method is also used for measuring the distance. Okay, so that is a pacing. Now the next, it is a small instrument which counts the numbers of the pace. Okay, અત્યારે તો આપણા મોબાઈલમાં પણ આવે છે, કાઉન્ટ થાય છે. All of you know that કે તમે કેટલા સ્ટેપ ચાલ્યા. Okay, so this instrument is also find the also used for the counting number of the pace. પેડોમીટર અત્યારે આવે છે, અગર તમને ખ્યાલ હોય તો મોબાઈલમાં. Okay, so that is also pesometer or pedometer. Okay, the next one is a pedometer. This instrument directly gives the distance by multiplying the number of paces with the average pace length of the person carrying the instrument. Okay, मतलब this is also a distance measuring unit. Okay, तो આજે હોય I this instrument is give directly you a distance. ઓકે, બાય કાઉન્ટિંગ યોર પેસીસ. આ તમે જેટલા પગલાં ચાલ્યા છે તે પગલાંને કાઉન્ટ કરીને અકોર્ડિંગ ટુ ધેટ તમે કેટલું ડિસ્ટન્સ કવર કર્યું. ઓકે, તો ધીસ instrument gives you directly. So this is a pedometer. This is also a distance measuring device. The next one, odometer. ओके, जो बाइक में यूज होता है, दिस इज ओडोमीटर. एंड ओडोमीटर इज अ सिंपल डिवाइस विच कैन बी अटैच टू द व्हील ऑफ द बाइसिकल और एनी सच व्हीकल. ओके, सो दिस may be
अटैच विथ द बाइक और विथ द कार, ओके, कहीं पे भी ये यूज हो सकता है, or any of the vehicle. The odometer registers the number of the revolution made by the wheel. Okay, आपका जो व्हील होता है वो कितने टाइम रिवॉल्यूशन करता है. ओके, सो अकॉर्डिंग टू दैट इट गिव्स अस अ डिस्टेंस. द डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस एंड द पेरीमीटर ऑफ द व्हील. ओके, सो the distance, how can we get the distance by the odometer? That is a product of the number of the revolution, आपके wheel के revolution, okay, multiply by perimeter of the wheel, okay, and it gives you a distance. This is used in automobile for measuring the distance. In automobile, in car, in bicycle also we can use this device, this odometer. Next is a measuring wheel. This is a measuring wheel. Okay, distance will be show over here. आपको यहाँ पे distance show होगा in this wheel. It is a wheel fitted with a fork and handle. Okay, so here it is a fork and handle. The wheel is fitted with the fork and handle. The wheel is graduated and shows a distance per revolution. Okay, आपका ये जो व्हील होगा वो ग्रेजुएट होगा एंड इट विल गिव अस रिवॉल्यूशन पर मीटर. एक मीटर पे कितने रिवॉल्यूशन हुए. ओके, दैट विल बी शो इन दिस डिस्प्ले. There is a dial which record the numbers of the revolution, thus the distance can be computed. Okay, distance can be computed in this by this display. Instrument used in, okay, instrument used in chaining. These are the instrument which are used for the chain and tape survey. अगर for the measuring the distance, अगर आपको distance measure करना है, length measure करना है, okay, so these are the instrument used for the chaining. The following instruments are used while chaining: the chain, tape, arrow, ranging rods, pegs, plumbo, line ranger. Various types of chains are used. These are the types of the chain which used for the chain and tape survey. They are the metric chain, contours chain, engineer's chain, revenue chain, steel band or band chain. So these are the various chains used for the chain and tape survey and instrument used for the chain and tape survey. So the first one is a metric chain. These are the type of the chain. First instrument is chain, and this is first type of the chain, that is a metric chain. Okay, so normally this chain consists of galvanized. Normally, this chain consists of galvanized mild steel wire of 4 diameter known as a link. Okay, ये जो होती है ना, this that is called as a link of a chain. Okay, इसे बोलते हैं हम link. And this chain is made up of galvanized mild steel. Okay, ये जो बनती है, it is made up from galvanized iron. Okay, and उसका diameter क्या होता है, 4 The diameter of this link is 4 Okay, both ends of the chains have brass handles. These are the ends of the chain. This is one end or second end. Both of the ends have brass handle. This one is a brass handle with swivel मैम आवाज joint. नहीं आओ तो. Hello. So that the chain can be turned round without twisting. Okay, we can turn round chain by use of these handles. In a metric chain, at every 1 meter interval of a chain, a small brass ring is provided. You can see at the interval of every 1 meter, દરેક 1 મીટરના ડિસ્ટન્સ પર અહીંયા આ તમને જોવા છે કડી. ઓકે, એવી બ્રાસ રિંગ અથવા તો બ્રાસની કડી હશે. ઓકે, the ring made up of a brass. Okay, at every 1 meter distance the brass ring is provided in a chain. Okay, so you can measure distance 1 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter. Okay, તમને ખબર પડે કે આ 1 meter distance છે, 2 meter છે, 3 meter છે, 4 meter છે, by the use of the brass ring. A small brass ring is brass
tallies are provided at every 5 meter distance. These are the brass tally. This is 5 meter, 10 meter, 15 meter. Okay, single hશે that means કે this distance is 5 meter. અહીંયા હશે that means this distance is 10 meter. અહીંયા હશે that means this distance is 5 meter. Okay, તો 10 meter સુધી આવી રીતે અલગ અલગ tally હશે. So strength of material 1080 કે 1070 બેમાંથી એક છે. Okay, these tallies are provided at every 5 meter distance. Brass tallies are provided at every 5 meter length of chain. Each tally has different shape. Okay, this all these tallies have different shape, so you can able to measure the distance. Okay, आपको पता चलेगा कि this tally is on for 5 meter distance, this tally is for 10 meter distance, this tally is for 15 meter distance. Okay, so आप confused नहीं होगे. So each tallies have different shape which indicate 5, 10, 15 meter from any one side of the chain. Okay, 5, 10, 15 meter from any one side of the chain. Metric chains are available in 20 meter and 30 meter length. ये जो chain की length होती है, इधर it is a 20 meter और 30 meter. metric chains की length या तो 30 meter होती है या तो 20 meter होती है. A 20 meter chain has 100 links, but obvious एक लिंक्स अगर 10 सेंटीमीटर की हुई तो 20 मीटर चैन हैज 100 लिंक्स, 100 लिंक्स ऑफ 20 सेंटीमीटर. ओके, द वन लेंथ ऑफ वन लिंक इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर. एक लिंक की लेंथ होगी 20 सेंटीमीटर. ओके, सो फाइव लिंक इज इक्वल टू 1 मीटर and 100 links is equal to 20 meter, and 30 meter chain has 150 link. Okay, in 150 in 30 meter length the 150 links are available. Length of chain is embossed on the brass handle of the chain. हमें चेन की लेंथ कहाँ से लेनी है, यहाँ से. ओके, यहाँ से हमें स्टार्ट करनी है लेंथ. ओके, सो फ्रॉम दिस लेंथ टू अनदर लेंथ, यहाँ से दूसरे हैंडल तक का डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू 20 मीटर और 30 मीटर. दैट इज द टोटल लेंथ ऑफ द चेन. Now the next is tape. Tapes are used for more accurate measurements. Okay, if you want to measurement more accurately, then you can use tapes. The tapes are classified based on the materials of which they are made of, such as cloth tape, fiber tape, metallic tape, steel tape, invar tape. So these are the types of the tapes. Okay, ये क्या है, अलग अलग टेप के टाइप्स है. Okay, so tapes are also a distance measuring device. In chain and tape survey we can use chain or tape. All of you please switch off your mics, please mute कर दो जिसके भी mics. Hello, Harshit, please mute your mic. Okay, these are the types of the tape: cloth tape, fiber tape, metallic tape, steel tape, and invar tape. So all these are the types of the tape. Okay, so these are the various types of the tape. So tapes are used for the measuring the distance. अगर या तो हम चेन यूज करते हैं फॉर मेजरिंग डिस्टेंस, या हम टेप यूज करते हैं. ओके, तो चेन एंड टेप बोथ आर यूज फॉर द मेजरिंग द डिस्टेंस मेजर करने के लिए चेन और टेप दोनों यूज होते हैं. एरोज. एरोज आर मेड अप ऑफ टेम्पर्ड स्टील वायर ऑफ डायमीटर 4 mm. ओके, तो ये जो एरोज होते हैं उसका डायमीटर होता है 4 mm एंड दे आर मेड अप ऑफ टेम्पर्ड स्टील वायर. One end of the arrow is bent. This one end is bent in ring of diameter 50 mm. The diameter of this ring is 50 mm and the other end is pointed. The other end is
pointed. Okay, its overall length is 400 mm. The overall length of this arrow is 400 mm. Arrows are used for counting the numbers of chains. Okay, these arrows, suppose we have to measure 100-meter distance. Okay, so measuring that distance, how many chain we have to use? Suppose length of one chain is 20 मीटर और हमें 100-मीटर डिस्टेंस मेजर करना है, काउंट करना है, लेना है. ओके, so हम कितनी chain use करेंगे? We have to use 5 chains, right? 20 meter. If length of one chain is 20 meter, then we have to use 5 chains. Okay, so हमें क्या करना है, 5 चेन एक के बाद एक हमें यूज करनी है. ओके, तो जहाँ पे हमारी फर्स्ट चेन खत्म होती है वहां पे हम क्या करेंगे, एरो एरो इंसर्ट करेंगे. सो हमें पता रहेगा कि दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू फर्स्ट एरो से सेकंड एरो के बीच का डिस्टेंस इज इक्वल टू 20 मीटर. फिर वहां से हम वो चेन उठा लेंगे और दूसरा 20 मीटर मीटर हम मेजर करेंगे, बिकॉज हम उसके लिए 5 चेन्स नहीं यूज करने वाले. ओके, फॉर मेजरिंग द 100-मीटर डिस्टेंस वी आर नॉट गोइंग टू यूज 5 चेन्स. ओके, वी हैव टू मेजर दैट डिस्टेंस विथ वन चेन ओनली. हमें एक ही चेन से वो डिस्टेंस मेजर करना है. दैट्स वाई व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू इंसर्ट एरो आफ्टर फिनिशिंग ऑफ एवरी चेन. अगर एक चेन जहाँ पे खत्म होती है, एट दैट प्लेस you have to insert arrow into the ground level. So arrows are used for counting the numbers of the chains while measuring a chain line. An arrow is inserted into the ground after every chain length measured on the ground. मतलब हर एक, सपोज यू आर यूजिंग 20 mm चेन, तो आफ्टर एवरी 20 mm चेन यू हैव टू इंसर्ट एरो इनटू द ग्राउंड. ओके, नेक्स्ट इज रेंजिंग रोड. सो दीज आर दी रेंजिंग रोड. इसे बोलते हैं रेंजिंग रोड. रेंजिंग रोड्स आर यूज फॉर रेंजिंग सम इंटरमीडिएट पॉइंट्स. ओके, सपोज आपको चेन फिक्स करनी है ठीक से स्ट्रेट. आपकी जो चेन लाइन है वहां पे आपको स्ट्रेट चेन करनी है, तो फॉर दैट यू हैव टू यूज रेंजिंग रोड. रेंजिंग रोड्स आर जनरली 2 to 3 मीटर लेंथ. ये जो लेंथ होती है दैट इज इक्वल टू 2 to 3 मीटर. दिस इज अ लेंथ 2 to 3 मीटर. इट इज अ लेंथ ऑफ द रेंजिंग रोड in length and are painted with the alternate bands of ब्लैक और वाइट और रेड और वाइट. ओके, वो क्या होता है, अल्टरनेट ब्लैक और वाइट या रेड और वाइट कलर से पेंट किए होते हैं. ओके, सो दीज आर दी रेंजिंग रोड. And the length of this painted portion is 20 centimeter. Okay, you have to you have to remember all these dimensions. If the distance is too long, a rod of length is 4 to 6 meter is used. अगर distance बहुत ज़्यादा है, in that condition you can use 4 or 6 meter ranging rod. Otherwise the length is 2 or 3 meter. Generally जो length होती है वो होती है 2 मीटर या 3 मीटर. बट सपोज यू आर गोइंग टू मेजर अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, सो इन दैट कंडीशन यू कैन गो फॉर द 4 or 6 मीटर and called ranging pole. Okay, and that ranging roads are called as ranging pole. Okay, if the length is 2 to 3 meter, then they are called as ranging road. But if the length is 4 to 6 meter, then that ranging roads are known as a ranging pole. The offset rod is similar to the ranging rod. This is offset rod. Okay, these are the ranging rods. This one is a offset rod. The offset rod is similar to the ranging rod with the exception that instead of the flag a hook is provided at the top. यहाँ पे at the top hook is provided. यहाँ पे आपका hook provide होगा. Okay, so this rod is known as a offset rod for pushing and pulling the chain or the tape. Okay, by the use of this rod we can push or pull the chain. Okay, for that the rod is provided at the top of the ranging rod. It is also used for measuring small offset. Okay, if you want to offset, क्या होता है offset, it is a obstruction between your chain line. Okay, अगर आपकी chain line के बीच में कोई obstruction आता है, suppose you want to measure distance between
मुंबई टू सूरत. ओके, सो दैट इज योर चेन लाइन. और उस चेन लाइन के बीच में सपोज कोई रोड आ रहा है, कोई बिल्डिंग आ रही है, कोई ट्री आ रहा है. सो ऑल दीज आर ऑफसेट्स, उसे हम बोलेंगे ऑफसेट्स. ओके, सो दे आर दी ऑफसेट्स. Pegs. Peg are made up of a timber or steel. Okay, so these are the peg and they are made of a timber of steel. This is a top uh, area of the peg, that is 25 mm by 25 mm. Length is equal to 150 mm, and this is a age of the peg. Okay, so pegs are made up of timber or steel and they are used to mark the position of the station or terminal points of a survey line. Okay, ये किस लिए यूज होती है? टू मार्क द स्टेशन. अगर आपको व्हाट इज स्टेशन अगेन? स्टेशन हम किसे बोलेंगे? टेल मी, क्या होता है स्टेशन इन सर्वेइंग? A reference point What is a Starting station? point Yes, that is a starting wherever point और end point of the survey. Okay, जहाँ से आप सर्वे स्टार्ट कर रहे हो या फिर जहाँ पे आप सर्वे खत्म कर रहे हो. सो दैट इज स्टेशन इज इट इज अ स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट ऑफ द सर्विंग. ओके, सो जो भी आपका स्टार्ट पॉइंट है, ओके, वहाँ पे आपको पैग इंसर्ट करना है. ओके, सो यू कैन रिमेम्बर, पैग आपको जमीन में इंसर्ट करना है. सो आपको याद रहे कि आपने यहाँ से सर्वे स्टार्ट किया था फ्यूचर में. Okay, so pegs are made of timber or steel and they are used to mark the position of the station or terminal points of a survey lines. Wooden pegs are 50 centimeter long. Okay, so this one is a wooden peg, and a peg and length of the peg is 15 centimeter, are driven into the ground with the help of the hammer. Okay, so we can insert the peg into the ground with the help of hammer. हम hammer की वजह से peg को ground में insert कर सकते हैं. The next one is a plumb bob. This is a plumb bob. ઓડમ્બો જેને આપણે કહીએ. અગર તમે મેશનરી કન્સ્ટ્રક્શન કોઈ જગ્યાએ દિવાલ બનતી હોય તો તમે જોયો હશે. This is a plumb bob. Plumb bob is used for transfer points onto the ground. अगर आपको कोई पॉइंट जमीन पे ट्रांसफर करना है, so in that condition you can use plumb bob. It is also used for fixing the instrument exactly over the station. Suppose आपको कंपास है और कंपास को आपको स्टेशन के ऊपर फिक्स करना है, so you can use by the use of the plumb bob you can do that. Okay, whether coincides with the center of the pegs or station, not by suspending the plumb bob exactly at the center of the instrument under it. Okay, so that I already told you कि if you want to fix some station over your peg, okay, आप अपने स्टेशन पे क्या इंसर्ट करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल पैग. ओके, तो आपको पता चल सके कि दिस इज योर स्टेशन. नाउ यू वांट टू फिक्स कंपास और थियोडोलाइट ओवर योर स्टेशन. आपको आपके कंपास या टोटल स्टेशन को पैग के ऊपर, मतलब सेंटर में पैग रहे, ऐसे आपको इंस्ट्रूमेंट रखना है. सो इन दैट कंडीशन यू कैन यूज द plumb bob. Plumb bob is thus used for centering aid in theodolites and plane table. Okay, that I already told you. Theodolite and plane table are the serving instrument. तो आपको अगर उनको स्टेशन पे रखना है तो यू कैन यूज plumb bob. It is an optical instrument used for locating a point on a line and hence useful for ranging. It consists of two isoscales, line ranger. Okay, what is line ranger? आपको दो रेंजिंग रोड को आपको अगर एक लाइन में रखना है, ओके, सो यू कैन गो फॉर दिस इंस्ट्रूमेंट. दिस इंस्ट्रूमेंट इज यूज. इंस्ट्रूमेंट कब होगा? जब आपको दोनों रेंजिंग रोड स्ट्रेट रखना है, मतलब आपकी जो सर्वे लाइन है, आपकी जो चेन है वहां पे. Okay, so that is a line ranger. It consists of two isoscales. यहाँ पे ये जो लाइन रेंजर होगा ना, इसके अंदर दो प्रिज्म होंगे, इसके यहाँ और यहाँ. ओके, सो जिसकी वजह से आपको ये दोनों रेंजिंग रोड दिखेंगे या ऐसे. ओके, जब आपको दोनों रेंजिंग रोड एक लाइन में दिखे, सो दैट इज अ रेंजिंग. और रेंजिंग मतलब जो आपको रेंजिंग रोड आप स्ट्रेट लाइन में रख रहे हो, दैट इज अ रेंजिंग. It consists of two isoscale prisms placed one over the another and fixed in instrument with the handle. The diagonals of the prisms are silvers or to reflect the rays.
ये जो प्रिज्म होगा यहाँ पे, बट ऑब्वियस प्रिज्म कैन रिफ्लेक्ट द रेज, ओके। तो उसके रिफ्लेक्शन की वजह से यू कैन रेंजिंग शुड बी डन। चेन सर्विंग ऑन प्लेन ग्राउंड, प्लेन ग्राउंड में सर्विंग कैसे करेंगे? सो दिस इज अ चेन सर्विंग ऑन प्लेन ग्राउंड। चेन सर्विंग is a type of surveying in which only linear measurements are taken in the field. Okay, so in chain surveying we have to take only linear measurements. This type of surveying is done for surveying of small extent or डिस्क्राइब द बाउंड्रीज ऑफ द प्लॉट्स, ओके। व्हेन वी वांट टू डिस्क्राइब द, जब आपको आपने आपके प्लॉट की बाउंड्रीज डिस्क्राइब करनी है, और फॉर दिस स्मॉल सर्वे यू कैन गो फॉर दिस सर्विंग। इट इज द मेथड ऑफ सर्विंग इन विच द एरिया इज डिवाइडेड इनटू नेटवर्क्स ऑफ ट्राइंगल्स दैट ऑल ऑफ यू नो नाउ, ओके। व्हाई हाउ वी हैव टू measure the distance? First we have to divide the area into small small triangles, और उसे small small triangles में divide करके then we have to measure distance for each of the triangle. It is the method of surveying in which the area is divided into networks of triangles and the sides of the various triangles are measured directly in the field with the chain or tape and no angular measurements are taken. तो यहाँ पे हमें कोई भी एंगुलर मेजरमेंट्स नहीं लेना है। वी जस्ट हैव टू डिवाइड एरिया इनटू स्मॉल स्मॉल ट्राइंगल्स एंड वी हैव टू मेजर distance for the each triangle. So this is chain and tape chain survey. The next one is a ranging. एक मिनट है। ओके, अगर 1 मिनट के अंदर अगर कॉल कट हो जाती है तो आप लोग फिर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। So the next is a ranging. When a survey line is longer than a chain length, जब आपकी सर्वे लाइन चेन लेंथ से ज़्यादा लंबी होती है, it is necessary to align intermediate points on chain line so that the measurements are along the lines. Okay, so when your survey line is longer than the chain line, अगर आपकी सर्वे लाइन बहुत ज़्यादा है, मतलब आपको बहुत लॉन्ग डिस्टेंस मेजर करना है, ओके, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप एक ही चैन से, बिकॉज लेंथ ऑफ वन चैन इज मैक्स टू मैक्स 30 मीटर। 30 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस आप एक चैन से मेजर नहीं कर सकते। सो इन दैट कंडीशन व्हाट यू हैव टू डू, आपको स्टेशन फिक्स करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, कि आपका स्टार्टिंग स्टेशन कौन सा है, आपका एंड स्टेशन कौन सा है, ओके। तो अब स्टेशन फिक्स करने के लिए आपको क्या करना है? तो आपको स्टेशन फिक्स करने के लिए आप क्या करोगे कि आप रेंजिंग करोगे। रेंजिंग मीन्स के रेंजिंग रोड की वजह से आप स्टेशन फिक्स करोगे। तो दैट इज अ रेंजिंग। द प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग इंटरमीडिएट पॉइंट्स ऑन अ सर्वे लाइन इज नोन एज रेंजिंग। तो आपकी सर्वे लाइन के ऊपर जो इंटरमीडिएट पॉइंट्स है उसे लोकेट करना, सो दैट इज अ रेंजिंग। देयर आर टू मेथड्स ऑफ रेंजिंग, डायरेक्ट रेंजिंग एंड रेसिप्रोकल रेंजिंग। So these are the two methods of the ranging. First one is a direct, the next one is a reciprocal. So this is your survey line A to B. Okay, यहाँ पे